हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बंजारा कपल। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट एपिसोड लेके आए हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड जिसमें वी आर इंटरव्यूइंग समवन हु इज़ फ्रॉम ट्रैकिंग कम्युनिटी, हु इज़ फ्रॉम माउंटेनियरिंग कम्युनिटी। वी हैव विथ अस अंकित नैथानी. He is a great mountaineer. He was referred to me by one of our friends, and we recently finished Gaumukh Tapovan Nandanvan trek with him. So let's start our interview. So Ankit, would you introduce yourself to our audience? For sure. My name is Ankit Nathani. My roots are Pahadi. I'm from Uttarakhand, Garhwal, but I was born and raised in Mumbai. Mountaineering is something that doesn't come very naturally to you when you're in Mumbai. I had to go back to my roots and discover this passion. As growing up, I was a very adventurous kid, so I was always outdoors. I was always climbing. I was always on a mountain. So it was not very difficult for me to then start trekking in the Himalayas, and that's how it started with me. I started trekking in the Himalayas. फिर वहाँ से धीरे धीरे you realized you wanted to go higher, you wanted to go do more technical things if you're capable of doing that. I did my basic mountaineering course in 2014 because I wanted to translate my passion into and see how it would work out. Basic mountaineering course करने के बाद I realized I was good at it. My instructors told me I was good at it. I was awarded the best student of my course. So that's when वो एक काइंड ऑफ एफर्मेशन आपको चाहिए थी कि यार आपको लग रहा है आप अच्छे हो, लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूट वालों को भी लग रहा है कि आप सही हो तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रैक लीडर इन द हिमालयाज, स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स. बीच में आई यूज्ड टू क्लाइंब माउंटेन्स व्हेनेवर आई यूज्ड टू हैव एन ऑफ सीजन. बीच में व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट टाइम, I started climbing mountains in Uttarakhand and mainly in Kumaon. That's how it started for me. And slowly ventured into Garhwal and then Ladakh. Did my advanced mountaineering course in 2017 from Himalayan Mountaineering Institute in Darjeeling. Then got introduced to one very amazing institute which is called NOLS, National Outdoor Leadership School in America. They run a camp every year in India. They have a subsidiary institute in India. मैंने अपना विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोर्स और ट्रिप लीडर्स कोर्स वहाँ से किया. हाँ, ट्रिप लीडर्स इज बेसिकली अ कोर्स. आई कॉल इट एन MBA फॉर अस गाइड्स. Learned a lot over there. Started guiding, understanding guiding more, and that's been the journey, and I've been guiding ever since. When did you realize कि यार mountaineering is a passion which inspires me? I have to do this. ऐसा any particular time या बचपन से ही पता था आपको ये चीज़? काफ़ी लेट आया मुझे, ऑनेस्टली. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. इट्स नॉट दैट यार इंडिया में कौन सा बच्चा ग्रो होकर बोलता है कि मुझे माउंटेनर बनना है. लाइक इट्स वेरी रेयर, राइट? पीपल wanna grow up and become cricketers, kabaddi players, but not mountaineers. It comes very late. When you start, I think most mountaineers become mountaineers in India when they start trekking and they start seeing big mountains, and the lure of big mountains is such कि आपको लगता है यार बस अभी तो मुझे चढ़ना है इसको. तो that's how it happened to me as well. Started trekking, realized I was fit, fast. Then realized यार ये थोड़ा और ऊँचे जा सकते हैं, थोड़ा और क्लाइंब कर सकते हैं, and that's when the courses happened. तो जनरली क्या होता है, जैसे कि आर्टिस्ट भी होते हैं, तो वंस यू स्टार्ट आर्ट तो कोई ना कोई आर्टिस्ट ऐसा होता है जो आपको इंस्पायर करता है, विच यू आप आगे बढ़ते हो. तो ऐसा आपके लिए एनी पर्सनल फिगर इन माउंटेनियरिंग कम्युनिटी? So I grew up reading a lot about about the outdoors, and I was gifted a book called Endurance by Shackleton. As a kid I read that book, Endurance, and I was just blown away by the fact that how much that team could endure and still come out safe and alive. So I think Endurance was one taking point where it really pushed me. Also growing up, I had the Himalayan journal that I got introduced to much later. Like I think in my late teens and early 20s I started reading the Himalayan journal, और तब मालूम पड़ता था कि लोग क्या अमेजिंग चीज़ें कर रहे हैं पहाड़ों में. और एज अ कंट्री इंडिया हम बहुत, आई वुडंट से पीछे हैं, बट हम बहुत कंजर्वेटिव हैं. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज I want to climb mountains, and I want to climb mountains by myself. I don't want to be dependent on a Sherpa or a guide to take me up. Alpine style. Climb Alpine style. भले मैं 5000 मीटर की पीक चढ़ूँ, पर मैं उसको खुद से चढ़ना चाहता हूँ. Since we are talking about Alpine style, would you please tell our audience what is Alpine style? Alpine style is a segment inside mountaineering जहाँ पे mountaineers और climbers खुद चढ़ते हैं. मतलब they don't take any help whatsoever. There is no guide, there is no porter, there is no Sherpa, there is no cook. So you haul your own weight. आप अपना पूरा सामान खुद कैरी करते हो,
बैकपैक्स आपके बहुत हैवी होते हैं और आपको ये बहुत ही कम स्पैन में करना होता है. तो फॉर इंस्टेंस अगर आप एक नॉर्मल पीक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में 25 दिन में करते हो तो आप बिकॉज आप खुद जा रहे हो या फिर आप 2-3 लोग मिल के खुद जा रहे हो, आप कोई भी फिक्स्ड लाइन्स वगैरह यूज़ नहीं करते हो, तो आपको इसको 7 से 8 दिन में निपटाना होता है. एंड बिकॉज आपको उसको 7 से 8 दिन में निपटाना होता है तो व्हाट हैपेंस इज देन you have to make sure that you are extremely fit. There is no plan B, you are the plan B. So it's nice I believe segment inside. Alpine word came from Alps, right? Alpine came from Alps. हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है माउंटेनियरिंग की, it's all from the Alps, the mountain range in Europe. सारे डेफिनेशन, सारे एग्जाम्पल्स और सारे टर्मिनोलॉजी Alps से ही आए हैं. ओके, तो हिमालयाज़ के लिए क्या यूज़ होता है? Himalayan mountaineering is very new in the larger scheme of things. For instance, अगर आप आइगर जो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पीक्स है यूरोप की, लोग 1838 से चढ़ते आ रहे हैं. बट इफ़ यू सी द मेजर पीक्स इन हिमालयाज वे क्लाइम्ड फ्रॉम 1950 to 1963. So Himalayan mountaineering is, even though it's now the most famous mountaineering, it's still very new, very nascent. हम टर्मिनोलॉजीज हम अभी भी समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी एक्सप्लोर हो रही हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस अभी भी आ रहे हैं. टाइम लगेगा, बट आई थिंक हिमालयन माउंटेनियरिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. Okay, and since we are talking about Himalayas, how many peaks have you climbed here? So I would say technical peaks, some technical, semi-technical peaks above 5,000-6,000 meters. I've attempted close to 20, 18 to 20 because I guide as well. So a lot of I'm guiding on them as well. So 18 to 20 maybe. Must have summited peaks above 6,000 meters, say about 6 to 8 times. Yeah, a lot of them in Ladakh, some in Uttarakhand, some in Himachal also. तो जैसे कि इंडिया के अंदर हिमालयाज आर एक्सपांडेड इन हिमाचल, उत्तराखंड, लाइक लद्दाख, एवरीवेयर. तो विच पार्ट डू यू थिंक इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ हिमालयाज? सो नॉर्मली हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि लद्दाख साइड ऑफ हिमालयाज आर स्लाइटली ईजियर बिकॉज आपके बेस कैंप्स काफ़ी ऊपर होते हैं, एक्सेसिबल है काफ़ी हुआ है, टेरेन इतनी ट्रिकी नहीं है. द टू मोस्ट ट्रिकी सेक्शंस ऑफ द हिमालयाज जहाँ पे काफ़ी माउंटेनर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो कम इन क्लाइंबिंग, वन इज़ उत्तराखंड का द गढ़वाल गंगोत्री बेल्ट. बहुत सारे टेक्निकल पीक्स जहाँ यहाँ पर हैं, जैसे शिवलिंग, मेरू, थलाई सागर, सतोपन तो इतना टेक्निकल नहीं है, बट लेकिन अल्पिनिस्ट्स के लिए ये सारी पीक्स काफ़ी अपीलिंग लगती हैं उन्हें. वन मोर साइड इज़ जो भी नया साइड खुल रहा है इस किश्तवाड़ इन हिमाचल एंड जम्मू, हिमाचल एंड जम्मू साइड. सो वो दो साइड पे काफ़ी lot of mountaineers, lot of alpinists from around the world are nowadays coming and climbing it. Till date, which has been the most challenging climb of your life? We once went alpine style in Kumaon. We were trying to climb this peak called Laspadura. It is above Pindari Glacier. We couldn't climb that peak. We got hit by real bad weather. It was very early in my alpine career as well, so I was very new, very nascent, very overconfident also, if I may add, overestimating our abilities. But we got smacked on the face Laspadura mein. It was really, really tough. You were doing it alone? So we were 3 alpinists who were doing it. And honestly, early on it was a reality check for me to understand that alpinism is difficult. We had a similar experience in Trishul also. We went to Trishul in 2022. सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो त्रिशूल चढ़ने जा रहे हो, बट त्रिशूल जस्ट smacked us on our faces. बहुत humbling experience था त्रिशूल चढ़ना. But ये दो experiences तो ऐसे हुए जो कि आपने attempt किए but you were not able to do. Yeah. Something which you actually did, but it was again very challenging. We climbed Kangyatse 1 last year. We were the first team to summit Kangyatse 1. So normally क्या होता है कि जब सीज़न शुरू होता है जो फर्स्ट टीम करती है उसका बहुत बोलबाला है, बिकॉज आपको रूट ओपन करना होता है, आपको बहुत सारे लाइक इन्फॉर्मेशन नहीं होती बहुत सारी चीज़ों के बारे में. सो जो फर्स्ट टीम जाती है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है. सो लास्ट ईयर Kangyatse 1 opening the route was quite challenging for us, I think, and we were doing it with one client also. So taking clients, and not one actually, 2 clients as well. So taking clients makes it all the more challenging, all the more sweeter. For a guide, I think that's one. We did Auden School last year also, which was Challenging. very, very challenging. Yeah. And since we are talking about challenging, would you tell us some of the challenges that our audience should be knowing of
while you are climbing any particular peak, or even if you are doing any difficult track? Yeah. Firstly, know what you're signing up for. समझो आप किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हो. सिर्फ इसी चीज़ के लिए साइन अप मत करो बिकॉज आपका दोस्त कर रहा है, दोस्त ने किया है. ये क्या, आई कैन गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. एक पीक है स्टोक कांगी लद्दाख में, बहुत लोग चढ़ते हैं उसको, बहुत लोग चढ़ा करते थे, अभी तो उसका परमिट्स बंद हो गई हैं. स्टोक कांगरी इन डिफरेंट सीजन इज़ वेरी डिफरेंट. तो अगर आपके किसी दोस्त ने उसको एक अच्छे सीज़न में किया है, जुलाई अगस्त एंड सितंबर में किया, जहाँ पे बर्फ़ कम है उसमें, तो वो इतनी बड़ी माउंटेनियरिंग चैलेंज नहीं रह जाती है. पर अगर आप उसको जुलाई में करोगे जब उसमें बहुत डंप ऑफ स्नो है, सो इट बिकम्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर. सो नो व्हाट यू साइनिंग अप फॉर. ट्रेन वेरी हार्ड. अगर आप पहाड़ों पे, स्पेशली अगर आपको एक्सट्रीम एडवेंचर करना है, डिफिकल्ट ट्रैकिंग करनी है, माउंटेनियरिंग करनी है, आप बिना प्रिपरेशन नहीं आ सकते आप. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव गुड केयर. देयर इज़ नो एक्सक्यूज टू गुड केयर. आपको गुड गियर की वैल्यू अच्छे दिनों में नहीं समझ में आती, आपको गुड गियर की वैल्यू बैड दिनों में समझ में आती है. एंड आई हैव लर्नड दिस द हार्ड वे. अगर आप गियर में 19-20 करोगे तो आपको बैड डे पे समझ में आता है कि क्या होता है. Okay. There are many audience with us जो कि ट्रैकिंग फील्ड और क्लाइंबिंग फील्ड से बहुत इंस्पायर्ड हैं. दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, बट दे समटाइम्स आर स्टक, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट देयर जर्नी. सो कैन यू प्लीज गाइड देम? Start off first with trekking. You know, trekking is, you start off with trekking करो. थोड़ी बहुत पहले असिस्टेड ट्रैकिंग में जाओ. अगर आपको लग रहा है कि आपने स्किल सेट बिल्ड कर दिया है तो देन गो टू डू अनअसिस्टेड ट्रैकिंग. माउंटेनियरिंग इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. अगर आपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट ट्रैक्स करने के बाद ही आप एक सिंपल माउंटेनियरिंग पीक अटेम्प्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से. बहुत सारी पीक्स हैं ऐसे इंडिया में, जैसे फ्रेंडशिप पीक है, कांग्यात से 2 है, यूनम हिक है लाहौल में. ये सारी पीक्स ऐसी हैं जो सेमी टेक्निकल हैं, इतनी टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक दिन टेक्निकल क्लाइंबिंग होती है. शायद उससे स्टार्ट करो, सी हाउ यू डूइंग, एंड देन स्लोली यू कैन मूव ऑन टू मोर टेक्निकल पीक्स. इट्स इम्पेरेटिव दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहले सिंपल रखें, फिर धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाएं. Are there any particular courses that they should opt for before starting all this? There is. Indian Mountaineering offers diplomas in mountaineering. It's a basic and advanced diploma जो हमने भी किया है. This is a 28-day program that teaches you basic skills and basic techniques of mountaineering, rock craft and ice craft. इसको आप इसको कर सकते हो, but just like how you can't straight away start practicing being a doctor out of a college, you can't straight away become a mountaineer. ये सिर्फ 1 महीने का कोर्स है, ये डिप्लोमा है. दिस इज़ नॉट अ कोर्स. इसे इंटरनेशनली अगर आप करने जाओ तो 3-3, 4-4 साल के कोर्सेज होते हैं माउंटेनियरिंग के. इंडिया में अब तक ऑब्वियसली उसकी नीड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल गाइडिंग को एज अ प्रोफेशन बनाते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं. सो ये डिप्लोमा इज़ अ गुड स्टार्ट. यू कैन स्टार्ट, बट देन इट्स नॉट वॉट यू डू ड्यूरिंग द कोर्स, वॉट यू डू आफ्टर द कोर्स दैट मैटर्स. क्लाइंब पीक्स, get experience, and then slowly you become better. और जब हम इस स्टेज में होते हैं ना, जब हमें लगता है यार मेरे को ये चीज़ करनी है, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग, तो वी always look out for यार whom I can follow, who are the persons who are inspiring. True. So any particular figures that you want to? Mountaineering has a lot many figures. One of the people that mountaineers swear by in India especially is Mr. Kapadia. Harish Kapadia has done a lot of research in the mountains. Good chap as well. This sir is very friendly, shares a lot of information as well. He's done a lot of interesting things, especially with one person who I think is is god figure in the mountaineering, Chris Bonington. Chris Bonington की book लाके पढ़ना शुरू कर लो. It's like a journal. It's like a textbook of mountaineering. Yeah, these are female figures. Any female figures? Like Bachindri Pal ma'am, what she did at that time was very inspiring, I feel. Given the limited resources she had come with. Mountaineering वो time पे बहुत मुश्किल हुआ करती थी. In Nepal में there is Lakpa Sherpa, who is a very inspiring figure. Her mountaineering journey has been very very inspiring. From a normal village girl जो गोरों को देखती थी अपने साथ अपने गांव से जाते हुए to become a record holder. I feel that's very inspiring. Nice. Yeah. And any movies, documentaries that we should watch? One absolute favorite is The Beckoning Silence. It's a beautiful documentary on the north face of Eiger. I love that. There's Meru by Jimmy Chin and Conrad Anker. 14 Peaks.
14 peaks also. That's a different kind of mountaineering. I don't endorse that mountaineering a lot, that kind of mountaineering, but it's Okay. a good documentary to watch. Especially inspiring. Quite inspiring. Yes. And one question I always wanted to ask, any particular story or any incident which happened with you which you really want to share with our audience, which is very, हर जाने के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है अपने करियर में. True. See, they say mountaineering is a sport where you require to be 3 paths crazy, 1 path sane. अगर आप सोचने लग गए आप क्या कर रहे हो तो फिर शायद आप नहीं कर पाओगे उसको. I remember this time when I was climbing, I was trying to climb Las Padura in Kumaon, and again, when you are young, you are a lot more risk taking. Your risk taking abilities are a lot more. Acceptable risk and unacceptable risk की definition बहुत blur हो जाती है. ऐसे ही एक expedition पे मैं निकल गया कुमाऊं में, जैसे इसके बारे में बात कर रहा था, and I saw this beautiful gully. I started climbing it. और ये स्क्री रॉकफॉल वाली गली थी, तो इतना मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं था. I started climbing it, and after about 80-90 meters of climbing it, I realized this has gotten steep. ये काफ़ी steep हो रही है और पत्थर काफ़ी गिर रहा है. But I could see the end of it, and I could cross over it. At the end of it, एक juniper tree था वहाँ पे. I remember this. So my objective was to catch onto that juniper tree and cross across and jump across. This is somewhere at about 4,900 meters. I reached up, caught hold of that juniper tree. As soon as I was trying to haul myself across it, that tree snapped and it broke. Oh. And by that time, I had climbed almost 150 meters on that gully. And I came sliding down. I remember thinking to myself that this is it, this is the end, and such a stupid way to die. But I don't know how miraculously after 20 meters of falling down, I stopped. And I had a lot of bruises to show for it. But I lived. So made me smarter, made me realize that alpinism mein you can't be taking all these risks. But these are the kind of mistakes which helps you grow. For sure. Never have I done that thing again, and I don't think I'll be doing it again. Yeah. Okay. So Ankit also runs a organization called Wandering Boots. So Ankit, would you like to share when you found it, what inspired you to found this particular thing? Fair. So I used to guide for other companies, and then I realized कि यार मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं लगती हैं, सही लगती हैं, whatever. That's when I realized that, why don't you do things the way you want it to be done? That was how that thought came into picture. Wandering Boots का inception around 2017 end में हुआ. We started off as a trekking company, and that's when I realized that I wanted to go higher, I wanted to climb higher, I wanted to take people higher. The thought behind Wandering Boots was to give genuine adventure in the outdoors, passionate for people who are passionate about the outdoors, and think about the outdoors as a place to be and as a place to reflect, and not just a place कि आप जाके आ गए यार और कुछ है नहीं. So that's how it started. We started off with some, like I said, simple treks. Slowly moved into mountaineering, picked up difficult trekking, build the skill set for it. आप suddenly आप ऐसे एक दिन खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे ऑडियंस को ऑर्गेनाइज करना है. So you have to build the skill set for it, build a team around it. काफ़ी fulfilling journey रही है. And now I can very proudly say that we're a group of about 6-7 strong guides who believe that we have what it takes to do difficult things in the mountains. We are constantly learning. We are not by any sort of imagination. We are a complete product. And I believe your niche is providing customized plans to your audience. We normally deal with customized requests because I think that is where our experience of curating an experience comes handy. We like to think that we know the Himalayas quite well, especially all across from Kashmir all the way down to Arunachal. So अगर people come in with a specific request, यार, for instance मुझे त्रिशूल चढ़ना है या फिर मुझे केदारकंठा ट्रैक करना है, that's the range sometimes. We don't do Kedarkantha trek very often though, but त्रिशूल तो करा देंगे. Any crazy request you have come across with in years? We do get a lot of crazy requests. Like there are a lot of people who want to go alone. Like I have these people who want to go alone, who say that we don't want to be spoken to. हमें अकेले बैठना है. We are going in. This was one request that we got last year. And that person for 4 days didn't want to speak to anyone. Just wanted staff को बहुत clear brief था कि don't speak to me. Nice. Yeah. So interesting. Very interesting. Interesting people. Very interesting. Yeah. Thanks. That was great, Ankit. Great. It Lovely was meeting great. you.
It was my pleasure. Awesome. So I hope you guys like this particular video. I hope it inspires you to trek more, it inspires you to climb more, attempt for any particular mountaineering course. And in case if you have any comments or if you have anything you want to share with us, kindly put it up in comment section. Thank you so much. Please subscribe to Banjara Couple, our channel, and kindly like and share our video. Thank you.